Everybody's talking about drones right now. The relentless bombardment combining advanced missile technology with swarms of unmanned aerial vehicles. It's one of the largest drone attacks. Is now reporting a major drone attack. But no one is talking about कि मुझे anti-drone system भी चाहिए. A drone can be $1,000 cheap, but in geopolitical situations हमारे world में चल रही है, we have seen that $1,000 drone is actually destroying $1 million refinery. कि आप drone को mind control कर सकते हैं. Yes. A drone costing just a few $100s can destroy military assets worth millions. Suddenly, decades of conventional military advantages are being challenged by a threat that's small enough to fit inside your backpack. This is why anti-drone systems have become one of the most important and most advanced technologies in modern warfare. In this episode, Squadron Leader Rahul Semwal takes us inside the rapidly evolving world of counter-drone warfare, explaining how militaries detect, identify, track, jam, deceive, and destroy hostile drones. The next generation of military dominance won't belong to the side with the most drones. It will belong to the side that can defeat them all. Hi Rahul, welcome to Dark Matters. Before I swamp you with a lot of questions, I want to set the context for our viewers. Everybody's talking about drones right now. The Iran war, US, even the Ukrainians and the Russians, they've changed the game, right? From a drone perspective, I think we have small drones, FPVs, and some stealth ones coming up as well. As an anti-drone expert, can you explain what an anti-drone system is as if I'm a 5-year-old? So thank you, Diva, for calling me here. So before I touch upon anti-drone system, I'll just talk about the basic categories, since you have told that it should be understood by a 5-year-old now, that drone thing. So what are drones? So drones are nothing that something that can fly without human involved inside the cockpit. So they can be flown remotely, and we have remote controlled aircraft also that have been flown. So drones are majorly fall into a few categories. We see some शादी बारात में जो drones होते हैं, they are also drones. So उनसे क्या करते हैं? What we do is we do some videography. We do a lot of other stuff with that. Second class of drones are called the FPV class of drones. So FPV class of drones are actually fast and they are being handled by professional. So professional pilots they handle. So वो drones बहुत fast होते हैं, they move very fast, and there are a lot of content available on social media that how an FPV drone flies and how a FPV drone. उनकी velocities काफी high होती है. Third kind of drones can be autonomous drones, which are actually used in war kind of situations. So autonomous drones are those drones that are being pre-fed. So programming पहले से fed होती है. अच्छा. और pre-programmed routes पे अपने जा रहे होते हैं, pre-programmed coordinates पे जा रहे होते हैं, without much of इधर-उधर करने से. And fourth kind of drones, as you have rightly told, is stealth kind of drones. So stealth is the last thing, but it is very expensive. So they have been used very high. This thing कि हमें we are very confident that यहाँ पे ये चीज अवेलेबल है और हमें इसको हिट करनी है. So still stealth technology is still very expensive. So उसके लिए वो drones use होते हैं. Now talking about anti-drone system, which is a meat of the matter, that what is the anti-drone system? Anti-drone system एक simple एक system है basically जो इन kind of drones को defeat करने के लिए बनाया गया. How to engage them, how to neutralize them, how to stop them. A drone can be $1,000 cheap, but in geopolitical situation जो हमारे world में चल रही है, you have seen that $1,000 drone is actually destroying $1 million refinery. So this is where the anti-drone comes into picture. So anti-drone systems are basically a counter of the drones. So in this हम क्या करते हैं? Either we shoot down or we neutralize them or we spoof them to a different location, so that जो उनका desired goal target है वो उसको अचीव ना कर पाए. उसके लिए मेरे पास एक बेसिक एंटी-ड्रोन सिस्टम की बात करता हूँ. उसमें हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, एक होते हैं सेंसर्स और एक होते हैं शूटर्स. तो सेंसर्स जो मेरे काम करते हैं, सेंसर्स बेसिकली उसको सेंस करेंगे. इट्स अ अर्ली वार्निंग काइंड ऑफ सेंसर्स, जो दूर से कुछ अगर आ रहा है मेरे पास उसको सेंस करेंगे. शूटर्स का काम होता है अगर वो सेंस हो चुके हैं एंड मेरी एंगेजमेंट रेंज में है तो मैं उनको शूट डाउन करूंगा या मैं न्यूट्रलाइज करूंगा या मैं जैम करूंगा, सो दैट जो उसका डिजायर्ड आउटकम है उसको मैं मिनिमाइज कर उसको मैं स्टॉप कर सकूं. सो सेंसर्स अगर मैं बात करूं, वेरी बेसिक, इफ आई टॉक अबाउट, देयर आर 3 सेंसर्स. वन इज कॉल्ड आरएफ, वन इज कॉल्ड रडार, वन इज कॉल्ड ईओटीएस, दैट इज कैमरा. सो आरएफ सेंसर इज अ पैसिव सेंसर. उसका काम कुछ नहीं होता है, एक डम सेंसर है बैठा हुआ है एंड इट इज ओनली लिसनिंग what is happening in air. So RF सेंसर क्या करता है? सिर्फ एक जो हमारी फ्रीक्वेंसी एयर में एमिट हो रही है उसको वो सेंस कर रहा है. what is that frequency? It is telling me that this frequency is getting emitted in air. अच्छा. So जो ड्रोन्स फ्लाई करते हैं उनके और ड्रोन पायलट के बीच में कम्युनिकेशन होता है जो रिमोट फ्लाई करता है. तो इट इज हैपनिंग ऑन सम फ्रीक्वेंसी. वो फ्रीक्वेंसी मैं पिक कर रहा हूँ, मेरा सेंसर पिक कर रहा है, मुझे बता रहा है ये एक फ्रीक्वेंसी एयर में एमिट हो रही है. ओके. रडार क्या करता है? जब ड्रोन एयर में होता है, रडार की रेंज में होता है, रडार उसको समझ पा रहा होता है कि एक क्रॉस सेक्शन है मेरे पास, मैं उसको देख पा रहा हूँ, तो रडार मुझे बताता है कि यार यहाँ से एक टारगेट ट्रैक पिक हुआ है मेरा, और उस ट्रैक को प्लॉट करना शुरू करता है.
डिजिटल स्क्रीन पे. Okay. So it is a continuous track, like you are moving your car on a road. So when आप जब मैप लगाते हो then you have a route planned, right? Correct. So in same way the track is getting plotted कि यहाँ से मेरा टारगेट स्टार्ट हुआ था पिक होना और अभी इस डायरेक्शन से आ रहा है और इस डायरेक्शन की तरफ हेड कर रहा है. अच्छा. So ये काम रडार का है. कैमरा क्या करता है, जब रडार और आरएफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है कि ये एक ड्रोन थ्रेट हमारे पास आ रहा है, तो हम कैमरे को उस लेयर पर ले करते हैं. तो कैमरे का मदद से हम क्या करते हैं, नाउ विजुअल कंफर्मेशन हमारे पास हो जाता है कि यस दैट सम ड्रोन इज कमिंग. उसमें भी कुछ DRI वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, डिटेक्ट, रिकॉग्निशन, आइडेंटिफिकेशन, विच हम आगे बात करेंगे. बट बेसिक ये है इसमें. जब अब मैंने इनको पिक कर लिया है एंड आई हैव अंडरस्टूड दैट मेरे खुद के कोई ड्रोन उड़ नहीं रहे हैं, ये एडवर्सरी का कोई हॉस्टाइल ड्रोन है विच इज कमिंग फॉर सम एक्टिविटी, नोटोरियस एक्टिविटी. इट मे बी अ कॉन्ट्राबैंड होगा या किसी तरफ डिस्ट्रक्शन करना होगा या जस्ट एक एरिया सर्वेलेंस करके वापस जाना होगा, व्हाटएवर जो भी होगा. तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करूंगा कि जो इसका डिजायर्ड इफेक्ट है वो ना कर पाए. वो करने के लिए या तो मैं जैमर्स यूज करूंगा, हाई पावर जैमर्स, जो उसके जो रिमोट और पायलट की जो ड्रोन है इसके बीच का कम्युनिकेशन डिस्टर्ब करे और ड्रोन को गिरा दे नीचे, फेल डाउन कर दे. स्पूफर काम करूंगा. स्पूफर क्या करता है, स्पूफर उसको फॉल्स GPS कोऑर्डिनेट्स देता है सो दैट आप अगर यहाँ पे हो एंड ड्रोन एयर में फ्लाई कर रहा है, ड्रोन पायलट को लग रहा है वो यहाँ पे है, बट एक्चुअली वो किसी और लोकेशन दिखाएगा उसको रिमोट पे. अच्छा, एंड यू कैन डू दैट. वी कैन डू दैट. स्पूफर्स आर अवेलेबल एंड वी आर, मतलब एवरीवन इज डूइंग इट नाउ. सो इन दिस स्पूफर व्हाट इज देयर इज, सिंस ड्रोन पायलट जो एक फिक्स कोऑर्डिनेट पे खड़ा है, वो ड्रोन 10 किलोमीटर दूर आ रहा है, उसको पता है मेरा ड्रोन एज पर माई कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे है. बट जब मैंने GPS से इसको स्पूफ करा ड्रोन को, तो ड्रोन पायलट को एक्चुअली अपने रिमोट पे कुछ और लोकेशन दिखेगी, मैं कहीं और फ्लाई कर रहा हूँ, तो ही विल ट्राई टू गो अवे टू दैट लोकेशन जहाँ उसको जाना था. ठीक है, बट इन दैट गेम व्हाट विल हैपन इज ही हैज ऑलरेडी बीन गोइंग इन राइट डायरेक्शन बट ही हैज ड्रिफ्टेड दैट मच टू गो टू दैट लोकेशन. तो मैंने उसको स्पूफ करा बेसिकली. ये तो होते हैं सॉफ्ट किल मेजर्स. नाउ हार्ड किल में क्या करते हैं हम, जैसे हम देखते हैं हमारे इंसास राइफल हो गई, मैं भी बेसिक बताता हूँ, जैसे इंसास राइफल हो गई या LMG हो गई, हम क्या करते हैं, वी पिक अप अ टारगेट, हम शूट करते हैं. सेम वे एयर में भी एंगेजमेंट होती है. सो एयर में एंगेजमेंट हम क्या करते हैं, हम एरियल टारगेट्स को जब हम डिटेक्ट करते हैं और जो मेरी गन्स की रेंज में होती है, मैं गन्स फायर करता हूँ उस पर. करेक्ट. तो दिस वाज वेरी बेसिक ऑफ एंटी-ड्रोन सिस्टम. इसमें जो एडेड लेयर आएंगी अभी, नाउ इसमें एडेड लेयर होंगी लेजर, इंटरसेप्टर्स, हाई पावर माइक्रोवेव्स. सो दीज आर काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई विल डेवलप ऑन लेटर व्हेन सब्जेक्ट विल कम. ठीक है, perfect. So Rahul, you mentioned hard kill and soft kill, right? Let's talk about soft kill more. कि मतलब जो ये jammers, spoofers हैं आपके equipment में, इनकी ranges क्या होती हैं, इनकी capabilities क्या होती हैं? And you did mention something like mind control. क्या आप drone को mind control कर सकते? तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप please? So किसी भी drone पे, any drone that we have 2 RF signals are already working. So एक RF signal जो होता है उसका, वो drone controller जो रिमोट है, पायलट है, उसके हाथ में है, और एक जो रिमोट है उस पे लगा हुआ है. इन दोनों के बीच में टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन हो रहा है. ठीक है. सो मैं नीचे से ऊपर जो दे रहा हूँ उसको, वो मैं कमांड दे रहा हूँ, इस वेलोसिटी से उड़ना है, इस हाइट पे उड़ना है, इस डायरेक्शन में जाना है. जो ऊपर से कमांड मेरे पे नीचे आ रही है उसे टेलीमेट्री बोलते हैं. टेलीमेट्री से मुझे डेटा मिल रहा है कि ये कितने हाइट पे है, क्या वेलोसिटी है इसकी. अगर मैंने इस पे कैमरा लगाया है तो आई विल गेट द वीडियो सिग्नल्स आल्सो. सो दोस काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग ऑन RF सिग्नल. सेकंड जो सिग्नल होता है उसमें GPS लगा होता है. सो GPS क्या करता है, सैटेलाइट सिग्नल पिक करता है और उसकी कोऑर्डिनेट बताता है. जैसे हमारी गाड़ियों में आजकल नॉर्मल लगा हुआ है, उसे कोऑर्डिनेट बताता है ये ड्रोन यहाँ पे फ्लाई कर. नाउ फर्स्ट वी टॉक अबाउट द जैमिंग. जैमिंग से हम क्या करते हैं, हमने जैसे कोई भी सिग्नल पिक करा, सपोज आई हैव पिक्ड एनी सिग्नल इन एयर, सो व्हाट आई विल ट्राई टू डू, आई विल ट्राई टू जैम दैट सिग्नल. ठीक है. कैसे होता है, आई विल एमिट द सेम फ्रीक्वेंसी on high power. So high power का मतलब ये है कि suppose I am whispering in your ear, in one of your ear with some pitch, and there's some other person who is whispering in your second ear with a high pitch. So आपका जो slow pitch वाला है वो सुनाई नहीं देगा आपको, दब जाएगा. आपका high pitch है वो आपको ज्यादा सुनाई देगा. तो मैं क्या करता हूँ, मैं ड्रोन के एंटीना पे वो जो हाई पावर है वो फेंकता हूँ. उससे क्या होता है, जो उसके बीच का जो सिग्नल है वो डिस्टर्ब होता है. और जब ड्रोन पायलट ड्रोन कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो ड्रोन को नहीं पता उसे करना क्या है. सो कुछ देर तक वो एयर में अपना लॉइटर करेगा और जैसे उसकी बैटरी अगर ड्रेन आउट होगी वो इट विल फॉल डाउन. सो आई हैव स्टॉप दैट थिंग. नाउ आपने सेकंड कॉन्सेप्ट पूछा स्पूफिंग का, हाउ यू आर प्लेइंग द माइंड गेम. स्पूफिंग में क्या होता है, कोई भी ड्रोन के ऊपर एक GPS जो लगा होता है, इट इज कम्युनिकेटिंग विद द सैटेलाइट. सो जनरली 17 से 18 सैटेलाइट सिग्नल उसको मिल रहे होते हैं टू गिव ए ट्रायंगुलेशन एक इफेक्टिव वे से उसको एक पिन पॉइंट कोऑर्डिनेट की मैं यहाँ पे हूँ प्लस माइनस सम मीटर्स ऑफ एक्यूरेसी के साथ. मैं स्पूफर के साथ क्या करता हूँ, आई विल मिमिक द सेम सैटेलाइट सिग्नल फ्रॉम ग्राउंड फ्रॉम अ रिमोट डिस्टेंस. सो मेरा जो GPS लगा है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग डेटा फ्रॉम सैटेलाइट, इट इज टेकिंग डेटा फ्रॉम ग्राउंड बिकॉज आई एम मिमिकिंग सेम सिग्नल विद सम हाई पावर. सो मैं मिमिकिंग सेम सिग्नल. सो नाउ मैंने इसका GPS कंट्रोल कर दिया. अब मैंने इसके GPS कंट्रोल करके मैंने क्या करा, मैंने इसमें फॉल्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड
इंजेक्ट कर रहा हूँ मैं। उससे क्या होता है, ये अपने जो ड्रोन ऑपरेटर है नीचे, ये उसको बताता है मैं यहाँ पे नहीं हूँ। सपोज ही इज फ्लाइंग ओवर दिल्ली एंड मैंने जयपुर कोऑर्डिनेट्स डाल दिए हैं, सो ड्रोन ऑपरेटर को अपनी जो स्क्रीन पे दिखेगा मैं जयपुर के ऊपर फ्लाई कर रहा हूँ, फिजिकली ड्रोन दिल्ली में है, सो उसको लगेगा मैं जयपुर के ऊपर फ्लाई कर रहा हूँ। सो व्हाट ही ट्राई टू डू इज इफ सपोज दिल्ली यहाँ पे है और जयपुर यहाँ पे है, ही इज फ्लाइंग इन दिल्ली बट मैंने अब जयपुर दिखाया उसको, सो अब वो क्या करेगा, ड्रोन को जयपुर से दिल्ली की तरफ लेना आएगा। सो जब वो लेके आएगा, एक्चुअली ड्रोन दिल्ली में था, वो आगरा की तरफ चले जाए। सो व्हाट आई हैव डन इज वेरी सिंपली आई हैव टोल्ड यू देयर इज अ लॉट ऑफ फिजिक्स एंड लॉट ऑफ दिस थिंग हैपेंस। सो इसमें होता क्या है, इसमें मैंने एक्चुअली डिजायर्ड इफेक्ट था उस ड्रोन का, मैंने वो स्टॉप करा है एंड मैंने उसको उस लोकेशन में कहीं लेके गया जहां पे मेरे मिनिमम कोलैटरल डैमेज हुआ है, मेरे मिनिमम कोई डैमेजेस। दिस इज हाउ स्पूफ वर्क। वाओ, माइंड ब्लोइंग, माइंड बेंडिंग स्टफ एक्चुअली। या व्हाट अबाउट ये आरएफ रेडार, ये जो आपका कैमरा है, इसका क्या रेंज रहता है? व्हाट आर द काइंड ऑफ लेयर्स दैट यू गाइस फॉलो इन द एयर फोर्स और द इंडियन आर्म फोर्सेस? So in Air Force, like any aerial threat, predominantly was a subject of Air Force only. So now अभी जो situation हो गई है with drone warfare coming up, so we have very assets like Rafale, assets like Sukhoi, MiG-29. So they are very expensive assets. And उन assets पे जो missiles भी लगी हैं, they are also very expensive. It's not very easy. So I cannot engage $1,000 drone or $2,000 drone with so much of asset with me. So I will have to have a neutralized anti-drone system architecture with me. So now आपने जो ranges बोली हैं, होता क्या है, RF जो मैं बोल रहा हूँ उसकी रेंज डिसाइड होती है वो जो सिग्नल है उस सिग्नल की कितनी स्ट्रेंथ है। होता क्या है, जब एक ड्रोन और ऑपरेटर आसपास पास में होते हैं, बट एनी वेडिंग सेरेमनी जो होते हैं, दोस ड्रोन्स आर नॉट फ्लोन दैट फार, हार्डली a किलोमीटर भी ज्यादा मैं बोल रहा हूँ आपको, हार्डली 500 meters एंड फ्रॉम देयर ओनली द एरियल शॉट्स और व्हाटएवर हैज बीन टेकन। सो उसमें क्या होता है, सिग्नल इज वेरी वीक, बट व्हेन ड्रोन्स आर बीन फ्लोन एट लार्जर डिस्टेंसेस अक्रॉस द बॉर्डर, ओके, एंड देन यू हैव टू कंट्रोल, सिग्नल हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। सो जितना कम सिग्नल होगा, इक्विपमेंट सेम है, अगर मैं एक सेम RF DD को मानता हूँ, इक्विपमेंट सेम है, वो एक वीक सिग्नल को थोड़ा कम दूरी पे पकड़ेगा। अगर वो सिग्नल बहुत बड़ा है, बेसिकली इट्स अ 4 watt सिग्नल और 3 watt सिग्नल, इट कैन डिटेक्ट एट लॉन्गर रेंजेस, इट कैन गो अप टू 15 किलोमीटर्स आल्सो, 12 से 15 किलोमीटर तक भी हम डिटेक्शन करते हैं। एक वीक सिग्नल को हम 5 किलोमीटर पे डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्शन इज ऑलवेज देयर, बट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट डिटेक्शन इज ऑलवेज अ गेम ऑफ व्हाट इज एमिटेड फ्रॉम द एंटीना। सो दिस इज द फिजिक्स, प्योर फिजिक्स। अब रेडार के ऊपर आता है। रेडार क्या करता है, रेडार कुछ वेव छोड़ता है एंड सम वेव्स आर ट्रांसमिटेड बैक, करेक्ट, सो इट प्रोसेसेस दैट एल्गोरिथम एंड व्हेन इट हिट्स द कंटीन्यूअस टारगेट ओवर अ period of time, it declares that this is a hostile target. So इसमें क्या होता है, when the drone is actually at a far distance, I will have a lesser RCS, I will see less of it, but when it actually start moving towards me, I will actually have more confidence on this something is coming up towards me. ये exactly RCS क्या होता है? So RCS का एक simple full form है radar cross section. अच्छा, okay. So radar cross section is nothing, basically it's lab tested philosophy wherein we know that ये मेरे पास अगर मैं कोई भी ड्रोन एयर में बनाता हूँ तो मेरे पास ये चीजें जो है वो emit करेंगी, वो emit करेंगे, उस हिसाब से मैं एक एरिया डिफाइन करता हूँ। So it is in square meters, like this thing 0.01, 0.1 square meter. So एक एरिया डिफाइन करता हूँ. So based on that RCS, I will decide my radar will perform at what distance. Okay. So if the RCS is again small, I will detect at smaller ranges. If the RCS is big, I'll go at a bigger range. Again, 10 से 12 किलोमीटर का डिटेक्शन is possible. Now people are enhancing up to 20 kilometers also, 30 kilometers also with different RCS. And 20 kilometers पे what kind of size of drones can you identify? Drones vary from DJI Phantom, DJI Mavic, Air 3s, बिल्कुल छोटे जो ड्रोन हैं. Correct. From there, then we have something called Shahid class of drones that are bigger drones. Then we have something called even the bigger ISR drones, which are actually at a size of a small fighter aircraft. Director Turkish wale, correct. So all TB2 and all those drones are of mini fighter class of drones. So they have a bigger RC, bigger wing form. They will have a jet engine which will emitting some energy वहाँ से आ रही है उसकी. उसका जो form factor है, जो उसका fuselage है, वो काफी बड़ा है. So उसका reflection is काफी अच्छा है मेरे पास. So वो मैं काफी दूर से उसको पकड़ लूँगा. So this is how RF and radar work. So weak signal detection will be on a shorter distance. Powerful signal I can detect at longer range. Same with RCS. Smaller RCS detection at smaller ranges. Bigger RCS detection is longer range. Simple physics. And what about the camera? You said कि 6 kilometers, 4 kilometers में आप बता सकते हो. So camera क्या करता है? Camera में simple philosophy है. We call something called DRI, detect, recognize and identify. So when I'm talking about this DRI, so camera will detect something at a far distance with some pixel resolution. So कुछ pixels आते हैं, उसको डिटेक्शन करता है कि कुछ है, देन उसको फिर वो जब वो टारगेट मेरे और क्लोज होना शुरू होता है तो मेरे पिक्सल रेजोल्यूशन और क्लियर होने शुरू होते हैं. एंड दिस इज हाउ टारगेट इज डिटेक्टेड, देन इट इज आइडेंटिफाइड विद मोर पिक्सेल्स, एंड देन व्हेन आई एम श्योर अबाउट दिस इज अ ड्रोन, इट विल स्टार्ट ट्रैकिंग. सो ट्रैकिंग का मतलब ये होता है कि जब मैंने उसको उसके जो रेजोल्यूशन जितने आने चाहिए थे कैमरा में, उसको मैंने पकड़ लिया है. नाउ उसको पकड़ने के बाद ड्रोन कैन फ्लाई इन एनी डायरेक्शंस, माय कैमरा विल स्टार्ट
tracking and moving along with it. So I'm not leaving the drone in air when I'm tracking it. अच्छा, let's say मतलब if the drone is not moving in a linear direction. Yeah, if it And is अगर moving वो hop कर tangential, रहा है, हाँ. if it is moving in tangential direction also, हाँ. so my camera will always detect and track. उसके साथ मूव करता रहेगा. Why is it necessary? I mean, you may ask why is it necessary? Because jamming तो हम कहीं भी कर सकते हैं. Jamming तो ओमनी भी होती है. Correct. कैमरा का मेन एंगेजमेंट है when I'm supposed to use some hard kill measure. Like if I have to fire a laser or if I have to fire a actual weapon like L70 or Zu-23 or INSAS or whatever weapon you talk about, if I have to fire an actual engagement, hard kill measures, उसमें कैमरा का सबसे ज्यादा important tool है. Because camera will give me the exact 3D latitude of that particular object जिसको मैं shoot down करूँ. Just a follow-up question and मतलब in terms of the camera में आपने कहा कि visual pixels दिख गए, but what about thermal cameras? मतलब I read somewhere now मतलब इतनी टेक आगे बढ़ गई है कि they can actually identify कि ड्रोन के 4 रोटर्स या 4 इंजन लगे हुए हैं. Yes. So has the Indian industry or the Indian armed forces developed such a technology? Yes. Or still WIP? No. It's developed. It is indigenously developed in India. Everything is available. Whatever I'm talking to you about is everything is available in India. We are self-reliant because of the policies that have been given by the government that we have to go IDDM, we have to develop. So because of that, Indian industry has come to that place that all these cameras are available. So thermal camera, coming back to your question, thermal camera. So thermal camera is actually a camera which is actually picking up the thermal image of an object. So thermal image is what the heat signature जो उससे निकल रहा है basically. ड्रोन में से heat signature होता है. तो propellers is one that is rotating. Some energy would be there. Correct. Battery pack एक होता है. So battery pack के अंदर कुछ energy होगी. अगर वो jet engine है उसमें, so jet engine will have something. Correct. So these are thermal images that has been given up. So these kind of cameras are very, very effective in bad weather conditions, where night conditions are there, where there is no visibility of any drone is coming. So these kind of cameras are actually used, and these cameras are available in Indian market. With the industry is going up to that. Interesting. And now to my favorite part, obviously, the hard kill. मतलब you did touch upon कि मतलब hard kill में INSAS rifle से AK-47 से you can just shoot down a drone or a shotgun. But can you also shed some light कि मतलब what type of hard kill systems are there? Yeah. And क्या डेवलपमेंट में हो रहा है? So hard kill में already जो हमारे weapons थे, जो हमारे known weapons हैं like 5.56, 7.62, 12.7, Zu-23, L70, these weapons are already used. These are legacy weapons. Legacy weapons. So what is happening now is there are industry and there are people who are doing this concept called RCWS, Remote Control Weapon Station. So what these RCWS are? These RCWS are just a platform in which the weapon can be mounted, co-located with the camera, and then camera once जैसे मैंने पूरा बताया कैमरा ने पूरा ट्रैक करा. जब कैमरा को ट्रैक कर रहा है लॉन्गर डिस्टेंसेस पे, सो जब वो एक वेपन के एंगेजमेंट रेंज पे आ रहा है, बिकॉज एवरी वेपन विल हैव देयर ओन एंगेजमेंट रेंज. 5.56 का अपना होता है, ठीक है. बिगर वेपन्स, कैलिबर वेपन्स विल हैव हायर एंगेजमेंट रेंज. सो एज पर दैट द कंप्यूटर कैन डिजाइन एंड डिटेक्ट, ओके दिस हैज कम टू माय रेंज, नाउ वी कैन स्टार्ट फायरिंग एंड एंगेजिंग टारगेट automatically. And but human will always be in the loop, because when we talk about firing, since it can do a collateral damage, the human will always be in the loop, decide that when to fire and not to fire. अच्छा. इसमें होता क्या है, जब हम फायर करते हैं, फायर करते हुए जैसे हम ग्राउंड टारगेट पे फायर करते हैं, तो ग्राउंड का टारगेट्स का मतलब होता है आई हैव फिक्स्ड टारगेट, आई एम फायरिंग. सो एवरी बुलेट विल, इफ आई एम अ गुड फायरर, विल ऑलवेज हिट द बुल. Correct. But in air the condition is not so. The drone is moving at a faster pace and the camera is tracking on the last leg. But when I am firing and when the bullet is traveling, my drone would have displaced to some radial distance, right? So इसमें ballistic computations होती हैं. How far the drone is moving, at what next coordinate it will move. Based on that, I will have my axis matched, ठीक है. And फिर मैं वहाँ firing करता हूँ. And multiple rounds are been fired. It is not single round. It's been fired and the drone will get down. So I have to fire multiple rounds to get the drone down, and it is possible. This is one kind of hard kill engagement with kind of guns. Second hard kill engagement I can do with kind of a concept called interceptors. So interceptors are kind of drones that are being laid with the help of radar or with the help of camera to the incoming adversary drone. Hostile drone आ रहा है, तो उसमें होता क्या है, when I have a exact coordinate of the drone which is incoming, I will lay on my interceptor again as per the range. If my interceptor is ranged up to 10 kilometers, it will go 10 kilometers. If it is of short range 2 kilometers, it will go 2 kilometers as per the requirement. So these interceptors will have something called as onboard sensing. So first जैसे इनको लेके जाना है towards that drone, adversary drone, can be done with the help of a radar or a camera. But final terminal phase जहाँ उसको engage करना है, उनके अंदर खुद के कैमरा लगे होते हैं onboard processing के लिए. So once this camera onboard drone interceptor has picked the target, so it will decide, and then on based on the command of the operator who's on ground, if he says kill, so this drone will go on high velocity
and either it will collide, or if it has proximity fuse अगर उनसे लगा कुछ blast का fragmentation कुछ warhead लगा है तो proximity में जाके उसको blast करेगा. So end game is again to neutralize and destroy the drone. So these are the hard kill measures. And when you say interceptor drones, I mean full marks to the Ukrainians, right? उन्होंने ये मतलब test develop सब कुछ करा है, right? What kind of interceptor drones do we have in India? I mean, I've seen those small ones, gun mounted. Yeah. कुछ ऐसे भी हैं जो 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहे हैं. So can you? So I read a lot of articles that are coming up, and you'll be astonished to know that yes, Indian market has come to some stage wherein we have built our own interceptors. There are people, and I keep on meeting a lot of people. So it is not something that is available only with Ukraine. In India also the tech is there. It is just the R&D push and the go that is required to have these interceptors onboarded. Yes, Mark 1 will always be Mark 1. But if Mark 1 will not be inducted, Mark 2 and Mark 3 will not be a story. Correct. So we have to induct with whatever we have and then to improvise on those. So Indian market, we have interceptors. The news that I've read recently in some news, we have interceptors up to range of 300 kilometers velocity to 400 kilometers velocity also. Achha. With onboard indigenized motors, propellers, and very few things are actually in foreign content in those. I believe we are meeting 70 to 80% of IC content in those interceptors, only purely built by India. Like designed, developed and made in India completely. Yes, and this is the story that we require. Absolutely. Because wars are not fought that we have something and we'll fight the war. Wars are fought because we have a industry backing it up to continuously give it when it is required. Correct. Like if we learn from Ukraine, Russia or Iran, US, what we have learned is you can sustain a war with whatever arsenal you have for 10 to 15 days. But to fight a war for 4 years, 5 years, you require their own industry to support. Correct. Because if you induct the foreign equipment into your own country, and when it is required, but they are already doing it, they're already fighting. So first preference they will give to themselves only, and they will not supply anything to you. And you'll be caught red-handed when it is required. And kudos to Indian industry and armed forces that there are several programs that are happening because of which industry is also making things that is required by the army. And army and all the armed forces I'm talking about, armed forces have come to this thing that yes, they also is accepting this, that logistical backing up of the country within is actually a need of the army. I totally agree with you, totally aligned. So moving on, I mean, again, anti-drone systems आपने कहा था कि बहुत अलग-अलग तरीके के होते हैं. And right now the flavor of the season is, man packs. कि भाई एक बंदा, let's say VIP security के लिए कर रहा है. I'm not interested in that. I'm more interested in the vehicle-based, man portable, जो armed forces actually use करेंगे in a conflict situation. So could you tell me something more about that? So vehicle based, when we talk about vehicle based, what is a vehicle? Vehicle is any platform which can be transportable feature. It can move from one mobile, it can move from one place to another. It gives me an added feature of moving the system at one place, at the same time moving it again to a second place. This is actually happening with the Army and Air Force. So vehicle, when I say about, systems can be on different vehicle platforms. It can be on a bigger vehicle. The requirement can be of larger sensors covering a larger area, and shorter vehicles. That okay, requirement is on, because mountainous region is there, I cannot deploy so heavy vehicles over there. So the system has to be in smaller vehicles. So vehicle systems are actually mobile and quick to deploy, basically. Okay. Sensors will always remain the same. Sensor and shooters will always remain the same. What the user want to pick up, यूजर को क्या चाहिए उसमें पिकअप करने के लिए कि मुझे ये सेंसर भी चाहिए मुझे, बिकॉज एवरीथिंग विल नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम, इट विल बी अ लेयर्ड अप्रोच दैट यू विल हैव टू हैव, and then only you can stop a drone intrusion basically. So vehicle platform, you will have bigger vehicles, then you will have smaller vehicles. This is on vehicles. When you talk about man portable system, why it is a flavor and why it is a need of the hour is because there are regions where even the vehicles cannot reach. There are places where still the equipments have been carried by mule or by the soldiers itself. So you cannot make something so bulky that it cannot be carried. And you can imagine the places where I'm talking about, the oxygen is so less. इतना कम ऑक्सीजन होता है कि एक सोल्जर को अगर मैं 50 किलो लगा दूं उस पे, हाउ विल ही क्लाइंब एंड टेक द सिस्टम? सो आई हैव टू बिल्ड समथिंग व्हिच इज एक्चुअली लाइट इन वेट and can do some kind of situations. But always remember, when we talk about man portable or vehicle based, there'll always be a trade-off. This can do what should be understood by the user. और ये trade-off क्या है फिर exactly? Trade-off could be ranges. Yes, I will have lesser ranges. I will have some sensors I will not have. Because in man portable version, if I'll have to have a radar also, if I'll have to have a camera also, RF also, it'll be very hard for me to make those kind of things. Because it's all of physics. Radar ऐसा नहीं है कि मैंने man portable में radar में बना के और मैं उसको बोलूँ को mule पे ले जा और मुझे deploy करना immediately, because radar will always have its inheritance and everything will come up with a trade-off. Then in jamming,
doing. I may have a jammer or a basic spoofer, but I will not have luxury of having an RCWS also in man portable, because man portable systems have to have some weight constraint. Like 2 बंदे उसको उठा पाए, 50 kg का बनाओ, 60 kg का बनाओ, 70 kg का बनाओ, but you cannot make a system 250 kg and call it as a man portable. So sensors, when I'm scaling down my sensors and reducing few sensors, I'm actually looking at a situation. Okay, I'll be able to tackle up this situation in case of man portable. I should not have that phenomenon in my mind. Okay, this is the anti-drone system. और ये एंटी ड्रोन सिस्टम में सारे वो काम करेगा जो एक व्हीकल वाला सिस्टम करेगा. आई शुड नॉट हैव दैट इन माइंड. एवरी सिस्टम, दैट्स व्हाट मैं आपको जो बोल रहा था, लेयर अप्रोच. तो लेयर अप्रोच में ये भी लेयर अप्रोच है. तो मैन पोर्टेबल सिस्टम विल वर्क on a shorter ranges, so ये third layer of protection. So first layer of protection could be your static or bigger vehicular systems which are actually doing long range. When you say static, मतलब वो एक जगह लगा हुआ है, fixed हो गया. So I can have those systems also. अच्छा. Requirements हैं ऐसी कंट्री में आज की डेट में जहाँ आपके vital assets हैं, vital points हैं. Like हमारे पास कुछ ऐसी locations हैं जो हम डिस्क्लोज भी नहीं करते हैं. हम मतलब we are not open to talk also about, but those locations are very strategic for us. Those countries' strategy is defined by these assets that we have. So on locations पे you cannot have a vehicle system. So what we will have, you will create dome kind of structure. So you will place static systems over there, and these systems, उसके अंदर you will have some mobile kind of systems, and उसके अंदर you will have man portable kind of systems. So it's a layered approach wherein you have, आपने पहले लेयर प्रोटेक्शन करा, सपोज नहीं हो पाया, सेकंड लेयर उसको डिफाइन कर रही है, नहीं हो पाया, थर्ड लेयर उसको प्रोटेक्ट कर रही है. सो अ लेयर्ड अप्रोच विल वर्क फॉर ऑल दीस एसेट्स. Very interesting. I mean, we also have a question from one of our viewers, Kapil. उनका simple question है, what's the scariest drone threat that the public doesn't even know exists? So scariest could be public what sees is all cinema. So drones are being seen in all over the reels, all over the videos, but anti-drone systems are not seen. So I would say there's nothing scary. Everything can be tackled. It is just the right system tackling the right adversary and right target. So मैं वही बोलूँ आपको, अगर आप सपोज समझिए 5.56 एक वेपन है आपके इंसास वेपन, उसका एक एंगेजमेंट रेंज है 400 मीटर, 800 मीटर, 600 मीटर इफेक्टिव एंगेजमेंट रेंज, टोटल एंगेजमेंट रेंज. सो अगर मैं ये बोलूँ कि सर आप ये वेपन लेके आप MMG जो आपकी फायर करती है रेंज पे जाओ आप, विच इज एट रेंज ऑफ 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, आप वहां फायर करो, I'll not have an effectiveness, right? So there's nothing scary. Let me assure you, is as a countryman also and as a part of, I've served in armed forces, so I'm aware there's nothing scary. But the right choosing of sensors for what the threat is actually meat of the matter. And we have all intel that what is happening in the world, what is happening in drone market, what is happening in stealth drones. So we have all the intels. And look at Iran, how Iran has tackled basically. Iran has tackled those kind of drones which are actually which were never been defeated in any of the wars. So there's nothing scary. It is just having a right content, right instinct, and right equipment at the same time to tackle this situation. So simply आप कह रहे हो भाई इंडिया ड्रोन प्रूफ है. इंडिया ड्रोन प्रूफ है 100%. 100%. एंड इंडिया की जो भी पॉलिसीज हैं, जो हमारी आर्म फोर्सेस जिस पे काम कर रही हैं, द पॉलिसीज आर सच दैट वी विल हैव सम काइंड ऑफ डोम स्ट्रक्चर in entire nation. The entire nation will be protected against all drone threats. Not at the border areas only I'm talking about. I'm talking about the areas which is actually hinterlands, deep inside, wherein you have some vital assets. Like you consider Delhi, it's a vital asset where there are many vital assets. So, and not only Delhi, Bangalore, you talk about airports, you talk about this temple trust, which are of very strategic in nature, so which have a lot of sentiments. So these kind of anti-drone systems will give a layered approach to entire nation as well as across the border. Protection की बात कर ही रहे हैं तो मतलब थोड़ा सा आप manpacks के बारे में बता दीजिए. So manpack system is also a requirement. Very few requirements are there because manpack systems will always come with their own limitations. So manpack system again manpack वो system है which can be worn by a soldier. At the same time it can do detection and neutralization. So, एक ही सोल्जर के साथ. एक ही सोल्जर के साथ. So it will have combination of sensors basically. It is not that I'm talking about only one sensor will do everything. So this is what comes on AI, what has been generated by AI, and what is the reality is altogether different. So ऐसा नहीं कि मैं ऐसा बोलूँ मैंने एक सिस्टम के अंदर सब कुछ लगा दिया, सब कुछ कर लिया, ऐसा नहीं होता. Possible ही नहीं है. Possible नहीं. Because there are EMC, EMI compliances, two systems operating at the same time. ठीक है, they will have interferences. So I'll have detection के लिए, suppose I have some RF detector, I have a jammer, okay. But manpack system के साथ एक issues क्या है, that when I'm reducing the systems to those weights, ranges are very drastically reduced. I get very short ranges, 1 kilometer, 1.5 kilometers, and frequencies I will not be able to jam all as of now. What I've read in media that is available and whatever articles that I've read. So there are systems that only can detect pure frequencies. It cannot be wideband system. Yes, the system is a requirement, is to be required,
But this is again in layer. This is the last layer of detection. So first layer will be a bigger system जिसको छोड़ अगर कुछ penetrate होते यहाँ पे आ गया. So a soldier should have something to protect himself. This is again one of the lessons that has been learned in Ukraine-Russia war, that what is happening with videos we are getting. Correct. Drone is following a soldier and he has nothing to defend himself. This is the last approach that will happen. So Rahul, before we wrap up, a few more questions. You said capabilities India में है, industry के पास भी है. Where do you, I would say, rank us, as in us, India, in terms of anti-drone tech, let's say compared to the NATO countries or the Americans or anyone else? Where do you rank us? Are we at par? थोड़ा पीछे चल रहे हैं? No, I should not rank at par. I should be very candid in this thing. Because there are very few companies in India which is actually doing core R&D in anti-drone systems. Very few. Let me be very blunt and let me be very true with you. When I talk about R&D, it requires a lot of time as well as money. And in India, in anti-drone systems, most of the people are not doing this. What they are doing is they are getting something from abroad, relabeling it and selling it. Again, that is available in open market that I am talking. And there are very few companies which are actually legitimately working in R&D, which are actually working that something needs to build for future. There may be a demand that is for today. Okay, I can work, I can make overnight and I can make the system. But if I'm not pushing my R&D, if I'm not pumping that money, if I'm not pumping that R&D hours, I will not be able to make something for the future. I would say yes, we are progressing towards making India a country that we should be at global standards. But at the same time, a lot of push is required both from the government, industry together to identify these kind of companies which are actually investing into R&D and making them take on lead to make the best of the class anti-drone system. So it will only happen with amalgamation of both, that inputs coming from the armed forces. Okay, this is required, and R&D has been pushed into that direction. If I want something as on yesterday, फौज में एक कहावत है, आज मुझे जो चाहिए मुझे एज एन yesterday चाहिए था. So R&D cannot happen on that. Everyone understands. Correct. In that, what I'll do some jugaad. I'll buy something from somewhere. I'll integrate something. I may give it to you, but tomorrow you will say, okay, now a threat has changed and you have to tweak some things from design. I'll not be able to. So an Indian industry or Indian company which is actually working in this domain will have this backing up, because IP will be with that company, ICDs will be with that company. So वो उसको tweak करेंगे, वो उसको और Mark 1 से Mark 2 बनाएंगे, Mark 2 से Mark 3 बनाएंगे. पर एक फॉरेन इक्विपमेंट आपको कभी वो करके नहीं देगा. आपको हमेशा एक नया इक्विपमेंट लेना होगा. Correct. With the burden of keeping the old equipment with you. And they can always deny, right? They can say, oh. So it is. I can give you my own examples in Air Force that has happened. A few equipment that we were using from abroad, because that country was having some tensions between that. So first preference, of course, they will give to themselves. मैं अपना घर का खाना पहले मैं खुद खाऊंगा, फिर मैं दूसरे को दूंगा. Fair enough. Right? So we have to develop everything within the country. So Rahul, if anti-drone systems are so important, इतना ज़्यादा important है to keep our border safe, right? And हमारा neighborhood भी वैसा ही है. It's not a very safe neighborhood, चाहे वो east or west or south हो, right? But the entire conversation, even if you read in the media, is कि Indian armed forces या government is saying let's buy X amount of drones या XYZ amount of rupee crores का drone खरीदता है. But no one is talking about कि मुझे anti-drone system भी चाहिए. What's that reason? Are we trying to hide it, या फिर लोगों को drones ही लग रहा है कि drones ही सब कुछ कर लेंगे आगे जाके? So that's what मैंने आपको पहले बोला था, जो दिखता है वो दिखता है, right? So anti-drone systems are not seen. They're invisible. They're working behind the scenes, right? So these kind of systems are not known to many, are known to only few. And the tech जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, वो टेक्नोलॉजी बहुत ही कम लोगों को, जो इनको समझ में आता है, उनको पता है वो क्या है. But what people think is anti-drone system is something that will stop a drone or defeat a drone. But wherein drones over a period of time, if you scroll your any social media, whatever you see, you'll see fancy kind of drones, fancy kind of flying. They will have camera is tracking on board, recording, then you will have blast, explosion. So there's a lot of cinema that is happening over a period of drones. This is where our Indian mentality will always go, or any mentality will always go. Whatever we see, we'll create a hype around it. What we don't see, we'll say that anti-drone system. So yes, I will never say that we should do a videography of what anti-drone system is, or we should do this thing, we should do, because those are strategic assets. But yes, there is a lot of push required, and the country is now at that stage where we are threats within also. Correct. Threats within also, that we should have anti-drone systems built for those threats as well, not only the threats which we are looking at the coastal line or the international borders. That is need of the hour. That's a superb answer. So my last question for you, I mean, what's keeping all the anti-drone experts awake at night? मतलब ऐसी क्या 3-4 चीजें, या even एक चीज है which is running at the back of your head कि अच्छा ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए. So what is happening is, when you talk about a product cannot be a product itself if I am not evolving that product. Because drone
concept and things that are changing in drone. It is changing every day. Every day drones are changing. Every day they are doing something, picking up how to evade by these anti-drone systems. So in anti-drone systems, as anti-drone experts, what we always think is that how to utilize these things, what kind of tech will be there in future. So you talk about drones, it was never heard of. Correct. In 2000, no one was aware what is a drone. You talk about 80s, no one was aware about what is a telephone is, right? So today people are not aware what anti-drone is, but anti-drone systems will take its shape when a time will come in next 20 years, 30 years, when people will come to know, because these are the kind of tech that is happening. Today we are fighting war in airspace. Tomorrow there will be fights in the upper stratosphere. So we are heading towards that. I believe we have some news that satellites are getting disrupted. So we will have to head towards that by making these structures. What we are thinking is, now we are not only thinking of building anti-drone systems to defeat drones. We are also building systems which fight wars in space, which is beyond stratosphere. So this is something that will keep us awake, keeping us awake in the night, reading articles, what kind of measures that we will take to defeat these kind of threats. Absolutely wonderful. I mean, that could be actually our next episode के लिए topic हो सकता है, space warfare. Yes, space warfare is something that is coming up. Absolutely. I mean, thank you so much for taking your time and explaining what an anti-drone system is. And like you rightly said, drones सबको दिखते हैं, but जो hard work, जो muscle जो build कर रहा है Indian Armed Forces, that is an anti-drone system. And obviously, designed, developed, and made in India should be what our industry and our armed forces should be chasing. Thank you so much, Rahul. It was a pleasure talking to you. Thank you, Divya. All the best and Jai Hind.